Hello aspirants, welcome to the yet another form filling video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil. This particular video we are shooting to help you in filling up the form for CLAT admissions 2023. All of us are aware कि CLAT ने अपने application form release कर दिए हैं 8th of August 2022 को, and this year for the very first time CLAT examination होगा in the month of December. सो अगर हम प्री कोविड की बात करें, कोविड की सिचुएशन को कंसिडर नहीं करें, उससे पहले नॉर्मली क्लैट का एडमिशन एग्जाम्स होते थे इन द मंथ ऑफ मे. दिस विल द फर्स्ट टाइम जबकि दिसंबर में एंट्रेंस एग्जाम होगा क्लैट का. जब से क्लैट ने नोटिफाई किया है कि इस पर दिसंबर में होगा, देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स whether they should attempt the December test or not, whether the CLAT will be conducting the test again in the month of May or not, what is going to happen, कैसे होगा इस बारी, normalization method होगा, कौन से वाला consider करेंगे. So I'll be helping you in that particular question, answering those questions. Along with that, I'll take you through the process of filling up the forms को कैसे fill करते हैं, कहाँ पर problems आती हैं, कहाँ पर students को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से fill करना चाहिए, कौन सी जगह पर actually problems आती हैं जिसको solve करना बहुत important है, and few important points about CLAT. Okay, so I'll take you through the process of filling up the forms. Before that, let me talk about the CLAT information first. All right, so let's talk about the important dates first. 8th of August 2022 का application form release हो चुका है. In the month of September, they said they'll be releasing their first sample paper, sample test. उसके बाद सितंबर में ही they'll be giving you a particular date जिसमें एक open campus visit day होगा, where you can visit the campuses of NLUs, and if you have some queries or कुछ questions हैं तो they might address you that particular thing also. On 14th of October, they'll be releasing second sample test, and October 22nd को ही they'll be releasing the or 22nd को they'll conduct the open campus visit again, that for the second time, and the last date to fill up the form will be 13th of November 2022 को, and October में ही एक और third sample पे test release होगा, and 18 December 2022 को entrance exam होगा CLAT का, which we are aware of it. Okay, so this is the entrance exam dates and some more important dates. Let's talk more about CLAT information. So CLAT के जो entrance exam होगा 23 वाला, जिसके लिए हम लोग exam देंगे in the month of December 2022, that will be happening offline mode. तो online नहीं है, इस बार offline mode पर होने वाला है. The date of examination, as we have already stated, 18th of December 2022. The timing is 2 p.m. to 4 p.m. If there's any another change, अगर कुछ change हो जाता है later on, so the university NLUs will be notifying us. The CLAT will inform us about it before. अगर कोई change नहीं होता, that the date and timing is fixed as of now. All right. Third thing is Indian nationals, NRI, PIO, and OCI category students will be appearing for the UG entrance test CLAT 2023 के लिए जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो उनको appear करना होगा. For the students who are foreign nationals, foreign national means जिनके पास पासपोर्ट इंडिया के बाहर का है, they are called foreign nationals. उनको CLAT का entrance exam देने की जरूरत नहीं है. Their process is different. For that आपको उनके brochures को पूरा ठीक से देखना होगा. Please refer to the brochure. Those who are applying for any of the category, if you're applying for NRI category, NRI sponsored category, or any of the category, I would personally recommend you guys कि आप उसका पूरा compendium को, उसके पूरे brochure को ठीक से पढ़िए, so that you don't make mistake in filling up the forms, because normally whenever you fill up the forms, अगर कुछ mistakes हो जाती हैं, it's actually very very difficult to reach to the university and get the problem solved or get it rectified. उनको contact करना, it will be a difficult task. Better than that, आप brochure को ठीक से देखिए, form filling videos को देखिए, refer to the videos, and उसको देख कर आप form को fill correctly कीजिए. All right. So I'll be talking about the documents which is actually required to fill up that form. They need the passport size photograph with a plain background and should be front facing. Second document is required, that is signature of the candidate. Signature कैसे create करते हैं, not that difficult one. आप एक white paper पे signature कीजिए and उसकी photograph click कर लीजिए. That's a e-signature kind of thing. Certificates भी requirement होंगे अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से belong करते हैं. अगर आप उसको mention कर रहे हैं तो you should have the certificate for that too. Relevant certificate for a person who is applying in PWD category. Okay.
अगर कोई स्टूडेंट है जो कि बीपीएल कैटेगरी से कर रहा है बिलोंग, और बीपीएल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहा है, तो विच इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा, ठीक है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू अटैच इन द फॉर्म। उससे पहले वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नोटिफाई यू गाइस, जब भी आप एग्जाम्स देने के बाद, इंटरव्यू सब कुछ होने के बाद, आपके एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद जब आप कॉलेजेस में पहुंचते हैं, तब आपको उनके हार्ड कॉपीज भी सबमिट करने होंगे। सो यू शुड हैव द हार्ड कॉपीज विद यू व्हेनेवर यू गो फॉर द एडमिशन, फाइनल एडमिशन इन द NLUs, ठीक है। सो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर अटेस्टिंग इट। सो यहाँ पर क्लैट के टाइम पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, आपको सेल्फ अटेस्ट या कुछ किसी अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड to attach the passport size photograph without attesting it, and a signature on the white paper. All right, so these are the information which is required, these are the things which is required. जितने भी documents अगर आप attach कर रहे हैं for any certificate you're attaching it, that has to be in PDF format only. So this is the requirement, documents requirement for CLAT form. All right, let's go ahead and talk about the other information about CLAT. There's no upper limit of UG examination CLAT 2023. That means कोई upper age limit नहीं है. Whatever age, आपकी जितनी भी एज है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए अपेयर कर सकते हैं। 10+2 आपका मिनिमम होना चाहिए। 45% मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स who are from general, OBC category, PWD, NRI, PIO और OCI category. Students from SC और ST category, the minimum percentage required is 40%. ठीक है, इतने 40-45% लाना is not a difficult task. So minimum percentage which is actually required to get into CLAT, appearing for the CLAT examination. ठीक है, मूविंग अहेड, CLAT के लिए जो भी लोग अपियर कर रहे होंगे, उनको जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब उनके रिजल्ट्स आ चुकेंगे, एट दैट टाइम यू विल बी सबमिटिंग योर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ योर 12th. अगर आप उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, दे विल कैंसल योर एडमिशन. ओके, सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास ये डाउट होता है कि फॉर एग्जांपल both there are two students and दोनों के सेम एंट्रेंस एग्जाम में सेम मार्क्स आते हैं, एंड उसमें से बेटर मार्क्स किसको मिलेंगे, बेटर रैंक किसको मिलेगा, किसको कंसिडर किया जाएगा फॉर अ बेटर स्कोर. सो उसके लिए बाइफरकेट करने के लिए उसको कैसे सेट करते हैं. फर्स्ट थिंग इज, उनमें से जो देयर आर टू स्टूडेंट्स, उनमें से जिसके लीगल एप्टीट्यूड में ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको बेटर रैंक मिलेगा, बेटर कॉलेज मिल जाएगा. सेकेंड, अगर बाई चांस उन दोनों स्टूडेंट्स के लीगल एप्टीट्यूड में भी सेम मार्क्स है, और मे बी 2 और मोर स्टूडेंट्स हैव गॉट सेम मार्क्स, सेम लीगल एप्टीट्यूड मार्क्स, इन दैट केस उसमें जो जिसकी हायर एज होगी उनको कंसिडर किया जाएगा. अगर इफ इन केस सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने सेम रैंक है और उनकी लीगल एप्टीट्यूड में भी सेम मार्क्स हैं और एज भी सेम है, तो उस केस में कंप्यूटराइज ड्रॉ किया जाएगा, बेस्ड ऑन व्हिच अ स्टूडेंट विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन CLAT. I hope this particular part is clear to all of you. ठीक है. So I'll be talking about the NLU participating in the CLAT examinations. तो इंडिया में अभी 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं in NLU थिंग. इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि CLAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. There are a lot of other private universities, बट मैं अभी बात करने जा रहा हूँ 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज की जो कि participate करती हैं for the examination. NLSIU, which is the topmost bank, which is called NLU Bangalore, first one. NLU Hyderabad, which is called Nalsar. NLIU, which is NLU Bhopal, National University Bhopal. NUJS, which is called National University Kolkata. NLU Jodhpur is there, and so on. There are 22 national universities in different states. NLU Raipur, Gandhinagar, लखनऊ, पंजाब, पटना, कोची, कटक, रांची, असम, विशाखापट्टनम, त्रिचिपल्ली, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, शिमला, सोनीपत, जबलपुर. दीज आर दी नेशनल यूनिवर्सिटी वी हैव इन इंडिया. ऑलराइट, सो इसमें मैं कुछ और बातें भी क्लियर करना चाहता हूँ गाइस. इस टाइम पर अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी किस में जाना है. अभी आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे BLLB करना है या BBLLB करना है. अभी ये मत सोचिए कि कौन सा वाला NLU मेरा ठीक रहेगा. अभी सिर्फ ये प्लान कीजिए कि मैं कैसे एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करूं, किस तरीके से उसको वर्कआउट करके अच्छा स्कोर लेकर आऊं. दो स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ प्रथम टेस्ट प्रेप, हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है, जिन्होंने अभी तक कोई भी कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया फॉर लॉ, आई वुड रिकमेंड गाइस ऑल ऑफ यू
कि आप कहीं पर ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, बिकॉज दिसंबर में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है. वी डोंट हैव मच टाइम फॉर द एग्जामिनेशन. इसके अलावा देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि दिसंबर में एग्जाम है, तो एनएलयू अपना एंट्रेंस एग्जाम इन द मंथ ऑफ में भी कंडक्ट करने वाला है. गाइस, लेट मी क्लियर दैट फैक्ट. अभी तक नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्लैट की तरफ से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है कि वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम इन द मंथ ऑफ में कंडक्ट करेंगे. आई वुड रिकमेंड ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स ऑफ 2023 जो भी 23 में ज्वाइन करना चाहते हैं, टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड प्लीज फिल अप दिस फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, सो प्लीज आप फॉर्म को फिल कीजिए क्लियरली, एंड लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट अदर इंफॉर्मेशन. सो यूजी का जो मैं पैटर्न है, क्लैट का पैटर्न है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर पैटर्न. 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, 150 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज होगा, +1 फॉर द पॉजिटिव आंसर, -0.25 will be for the negative answer that will be deducted. And content के आने वाला English language will be there. You have the current affairs, which include the general knowledge too. You have the legal reasoning, you have logical reasoning, and quantitative techniques or quantitative aptitude. A lot of people known as call it as quantitative aptitude. Quantitative aptitude, quantitative techniques are all same. So these are the pattern of the entrance examination. ये आने वाला है pattern. So इस बेसिस पर ही नेशनल यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को सीट ऑफर करें. ऑलराइट, सो इंफॉर्मेशन अबाउट CLAT courses offered in CLAT. Lot of NLUs has BLLB, BBLBs offered in a few of the NLUs. BCom Honors LLB, BCom LLB is there, BSc LLB is there, BSW LLB also is there. So as I already stated कि अभी आपको जो भी लॉ के लिए परफॉर्म करना है, तो अभी बस ये मत सोचिए कि आपको कौन सा लॉ करना है. प्लीज फोकस ऑन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. ऑलराइट, जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, हमारा प्रथम के फोन नंबर्स आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लोअर साइड. आप हमारे पास फोन करके इंक्वायर कर सकते हैं, इंक्वायर अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड, एंड प्लीज ज्वाइन सो दैट आप टाइम से आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर पाए इन दी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलरेडी बता चुका हूँ. 45% इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, फॉर 40% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरीज. जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर व्हाटएवर मेरिट यू विल गेट, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट दी सीट इन दी NLUs. Application form released on 8th of August 2022. Last date to fill up the form is 13th November 2022. Exam is offline 18th December 2022 को. लिंक है, डायरेक्ट लिंक वी हैव ऑलरेडी गिवन, consortium of nlus.ac.in/CLAT-2022/. If you enter that particular thing, you will get the direct form link. आपको CLAT की वेबसाइट के थ्रू जाना है तो जा सकते हैं, otherwise this is the direct link. Application form is cost is 4,000 rupees, which is excluding the taxes, the payment gateway taxes. So 4,000 is the general for the general OBC, PWD, NRI, PIO, and OCI category. 3,500 rupees for SC, ST, BPL categories. All right. So this is the application fees. To get into the main registration page, I will click on this particular link, and this is the main registration page for CLAT. So register करने के लिए on the right hand side I have an option called register. I will click on register, and this particular page I'll get. So I will have to punch in my name on the upper side. I will have to punch in the mobile number, my email ID, the password, and I will have to confirm the same password. Guys, very very important piece of information. आपको अपना passwords कहीं ना कहीं सेव करके रखना है. These passwords are very very crucial because जब आपके results आते हैं, आपको अपने username और password पता होना चाहिए, using which you will be accessing your account and you will be seeing your results. अगर आपके password खो जाते हैं, it is actually difficult to get your passwords. Those who have already joined प्रथम, हमने अपने students के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है. पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड फॉर्म्स वॉलेट, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स अपने यूजर नेम और पासवर्ड्स को सेव कर सकते हैं, एंड दे कैन यूज इट व्हेनेवर दे रिक्वायर इट. ओके, सो आई हैव टू फिल दिस इंफॉर्मेशन. आई विल क्लिक ऑन रजिस्टर. वंस आई क्लिक ऑन रजिस्टर, आई विल गेट अ OTP ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. मुझे वो OTP यहाँ पर पंच इन करना होगा, एंड आई विल क्लिक ऑन एक्टिवेट. वंस आई क्लिक ऑन एक्टिवेट, आई विल गेट दिस पर्टिकुलर पेज where I will click on
undergraduate program. So students who are opting for 5 years law program जो 12th में है, जो कि 5 years के लिए plan कर रहे हैं, you will have to click on this particular option and click on OK. So now we have got the main registration page of CLAT. Whole form is divided into 5 sections. One is personal information, communication details, qualifying examination details, preferences and reservations. So after that, after filling all this information, I will have to make the payment of application form. Okay, so let's start filling up the form. Application name, I will have to punch in my application name here. On the right hand side, I will have to mention the gender. Date of birth needs to be mentioned. On the right hand side, I will have to mention the father name. I will have to punch in the mother name. On the right hand side, I will have to mention the nationality from where I actually belong. यहाँ पर categories का option है. If I belong from any of the category, NRI, OCI, PIO category. अगर मैं इनमें से किसी भी category से belong करता हूँ, I will choose this. अगर मैं इनमें से किसी category से belong नहीं करता हूँ, so I will not touch that option. I will keep it blank. Alright. ऑल इंडिया कैटेगरी क्या है, SC, ST, PWD कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, आप उसको मेंशन कीजिए. एंड बिलो दैट यू हैव NRI ऑप्शन, येस और नो, आपको उसमें मेंशन करना होगा. एंड इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू PWD कैटेगरी, येस और नो, आपको उसको मेंशन करना होगा. If you guys can see on the top left and right hand side, you have an option called upload the photograph and signature. I have filled in this information. After that, you will have to upload this photograph and signature. See, I have already uploaded that information. Now the thing is, there are a lot of students who actually face problem in attaching the photograph and signature because उसका एक particular format होता है जिसको हमको attach करना होता है. For example, यहाँ पर already mentioned है, you need to attach the photograph and signature in JPG, JPEG and PNG format only. So there are a lot of students जब भी आप कोई photograph को click करते हैं, attach करते हैं, normally photograph को click करने के बाद उनका साइज होता है फोटोग्राफ का 3 MB 4 MB डिपेंडिंग अपॉन द रेजोल्यूशन यू हैव चोजन व्हाइल क्लिकिंग द पिक्चर्स. उसको फोटोग्राफ को डिक्रीज करना और कंप्रेस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली यूनिवर्सिटी को जो साइज चाहिए होता है ऑफ द फोटोग्राफ इज नॉर्मली 100 KB. सो आपको 100 KB से नॉर्मली उसको डिक्रीज करके रखना होता है. हाउ टू कंप्रेस दैट थिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस. आपको क्लिक करना होगा अपलोड पर. जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, इट विल आस्क यू टू अटैच द फोटोग्राफ. नाउ अगर आप देख रहे हैं कि आपका फोटोग्राफ का साइज काफी ज्यादा है, 3 MB 4 MB है, so how to compress that thing? You can go to Google, just type there compress image. You get a lot of online softwares inside it using which you can compress the size of the photograph. और अगर आप Windows laptop use करते हैं, in Windows laptop also in paint section it is very very easy to compress the size of the photograph. उसको कैसे कर सकते हैं, let me tell you the process. कि एक पेंट पे मैंने कोई डमी फोटोग्राफ क्लिक कर लिया, I will click on resize options. When I click on resize option, I will get this dialog box. On this dialog box, I will click on pixels. Pixels पे क्लिक करने के बाद I have the option called horizontal pixels का vertical and horizontal option आ जाएगा. I can decrease the pixel size. For example, अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, I will decrease the pixels and I will click on OK. Once I click on OK and I will save it, it will automatically decrease the size of the photograph. On the lower part, I will be able to see कि size फोटोग्राफ का कितना हो चुका है. If I further want to decrease the size, maybe हो सकता है मैं 1 MB से उसको 500 KB कर चुका हूँ और 500 KB से भी मुझे कम करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग मैं उसको और कंप्रेस करके उसको सेव कर सकता हूँ और पिक्सल्स को डिक्रीज करके मैं उसकी फोटोग्राफ को डिक्रीज कर सकता हूँ. ठीक है, सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू अटैच द फोटोग्राफ. उसके बाद आपको सिग्नेचर में भी सेम प्रोसेस को यूज करना होगा एंड उसके बाद आपका प्रोसेस फिल इन हो जाएगा. Once you attach the photograph and signature, the next option comes, which I've already informed you. Have the communication details. You'll have to punch in your address, correspondence address and permanent address on the lower side. So you have to punch in your proper address. I have punched in HS14 Kailash Colony, New Delhi, state, district with the pin code number. I will have to punch in the same information on the lower side if it is same. If the permanent address is different, I will have to manually mention the separate address on the lower side. On the right hand side, I will have to punch in the mobile number and I will also have to give my alternate mobile number on the lower side. Once I do it, I will click on save draft. Once I do it, it will take me to the next page where I will have to punch in the 12th information. Okay, so in 12th, I am in 12th standard right now. Supposingly, my board is CBSE, appearing for the 12th examination. If I'm appearing for the 12th examination in the month of March or April or February or March, so that is appearing. अगर आप already appear कर चुके हैं तो उसके लिए आपको अपने marks भी डालने होंगे.
ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग की जगह अपीयर पास्ट लिखना होगा, तब आप जाके आप उसको चूज मार्क्स एंटर कर पाएंगे। सो इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, प्लीज पंच इन अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Month of passing, I have mentioned July 2022, and percentage you can leave that blank because as of now you have not got the final percentage of 12th. You will keep that blank. Okay, so I will click on this particular option. It will take me to the next thing, next page. Now here I will have to give the preferences for the city where I actually want to give the entrance test. Supposingly I stay in Delhi region, so मेरे को सबसे नियरेस्ट लोकेशन पर आप मुझे एग्जाम देना है, तो आई हैव चोजन दिल्ली एज अ टेस्ट सेंटर 1, आई हैव चोजन गुड़गांव एज टेस्ट सेंटर 2, एंड आई हैव चोजन फरीदाबाद एज टेस्ट सेंटर 3. ठीक है, once I do it, I will move forward, go to the next page. Let's go to the reservation page. Okay, तो यहाँ पर हर पेज पर, हर ऑप्शन पर आपको एक रिजर्वेशन ऑप्शन मिलेगा. So supposingly it is written, are you a Karnataka student? Yes or no, you'll have to punch in that. Are you resident of Telangana? Yes or no. NLU हैदराबाद के लिए. For NLU भोपाल यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन का ऑप्शन नहीं है. For कोलकाता ऐसे ही आपको इंडिविजुअली yes or no आपको टाइप करना है. Once you see and select the options, you will click on submit form. Once you click on submit form, you will get this particular page. यहाँ पर आपका लास्ट में जाकर एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपका एक टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड गिव योर कंसेंट हियर एंड क्लिक ऑन फाइनल सबमिट और सबमिट फॉर्म. Once you click on that option, you will get your performer or the details of the information. You will have to validate your email ID. How do you validate your email ID? You will click on validate your email ID. It will send you the OTP on the registered email ID. You have to punch in that particular request for OTP. You'll have to punch in the OTP which you will get on your email ID with this particular email, and you have to punch in the OTP, and finally your email will be verified from their side. The last step is to make the payment. As I've already said, I have chosen the general category, so I will have got this particular option, 40,000 rupees for the general category, because I have chosen 40,000 rupees. If I am from SC, ST, PWD category, that will be 3,500 rupees. अगर मैं अलग से क्वेश्चन पेपर भी परचेज करना चाहता हूँ क्लैट की तरफ से, तो मैं उसको भी परचेज पे कर सकता हूँ बाय पेइंग 5 रुपीज यहाँ पर येस करके. एज ऑफ नाउ आई हैव पंच इन नो देयर एंड आई विल क्लिक ऑन कंफर्म पेमेंट. It will give me this particular option. I will get pay now option, and finally the payment gateway charges is 16 plus GST. So finally I will have to pay 4,018.88 for the CLAT admission. I will click on continue and my payment is done. If in case you guys face any kind of problem, any issues is there, you can directly contact any of their the team members there. Their phone number is written and their email ID is mentioned. You can mark them a mail or you can call them from 10 to 5 p.m. all working days. So this is how you actually fill up the form for any kind of things. I have already informed you, आपका username password आपको save करना बहुत 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 important है. That is very very important. So this is how we fill up that form. If in case कोई भी ऐसी problem, कोई भी issues आते हैं जिसमें आपको problem आती है form filling के time पर, please feel free to contact us. Our phone numbers are given on the left hand side. आप हमारे पास contact कीजिए. Take a help in filling up the form, but please form को गलत मत fill कीजिए. So I wish all the best to all the law aspirants. Give your best shot and please start preparing for your entrance test of CLAT. Very very important. Thank you and have a nice day, people.